Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about Gagne's hierarchical theory of learning. Okay? So यहाँ पे Gagne का theory of learning के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो यहाँ पे Gagne क्या कहते हैं? About the learning theory. Okay? Gagne's hierarchical theory of learning proposed by educational psychologist Robert Gagne outlines a structured approach to understanding and facilitating learning process. It is a part of his broader framework of instructional design and cognitive psychology. ओके तो यहाँ पे गैग्ने पहले ये जानना है हमें कि गैग्ने हायरार्चिकल थ्योरी को प्रपोज किसने किया था. यहाँ पे प्रपोज किए थे साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट गैग्ने. ठीक है, जिन्होंने इस थ्योरी के बारे में कुछ बताया है. वहां पे सम की कंपोनेंट्स आर देयर. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द की कंपोनेंट्स. व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज लर्निंग हायरार्ची. ओके, व्हाट इज लर्निंग हायरार्ची? Gagne suggested that learning occurs in a hierarchical sequence. हायरार्ची का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हायरार्ची का मतलब होता है स्टेप बाय सीक्वेंस में जाना. ठीक है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. जहां हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाते हैं वो होता है एक सीक्वेंस, उसको ही हम बोलते हैं हायरार्ची. तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गैग्ने वहां वो क्या कहते हैं कि लर्निंग जो होता है ना एक हायरार्ची में होता है. ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है. Okay, so here you can see the Gagne suggested that the learning occurs in a hierarchical sequence where simpler foundational skills must be mastered before more complex skills. तो complex skill तक पहुंचने के लिए उससे पहले हमें उसका फाउंडेशन सही होना चाहिए. पहले जो सिंपल स्किल्स है उसको उसमें मास्टरी होना चाहिए. उसके बाद ही हम कॉम्प्लेक्स स्किल्स के तरफ जा सकते हैं, उसको सीख सकते हैं. ठीक है, each step in the hierarchy builds upon the previous one, creating a structured learning progression. ठीक है, तो हमेशा दूसरा स्टेप पहला स्टेप से कनेक्टेड होता है. ठीक है, जैसे कि हम पहले नर्सरी में क्या एबीसीडी अल्फाबेट्स ही सीखते हैं. ठीक है, अगर हम अल्फाबेट्स नहीं सीखेंगे तो वर्ड फॉर्मेशन नहीं सीखेंगे. वर्ड फॉर्मेशन नहीं सीखेंगे तो सेंटेंस बनाना नहीं सीख सकते. सेंटेंस बनाना नहीं सीखेंगे तो पैराग्राफ बनाना नहीं सीखते. इस तरह से हर लर्निंग का एक सीक्वेंस होता है. लर्निंग उसको हम लर्निंग हायरार्ची कहते हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट वी शुड लर्न द फाउंडेशन स्किल फर्स्ट. सिंपलर फाउंडेशनल skills must be mastered then before the complex ones. Okay, so what is the next key components? Let's see. Second one is your types of learning. What are the different types of learning here? Here Gagne identified 8 types of learning. Okay, ranging from simple to complex. First one is your signal learning. Okay, signal learning में होता क्या है? Basic conditioning responding to a stimulus. यहाँ पे एक बेसिक कंडीशन होता है जहां पे कि एक स्टिमुलस को हम रेस्पॉन्ड करते हैं, उसको बोला जाता है सिग्नल लर्निंग. ठीक है, इट्स रेस्पॉन्डिंग टू ए स्टिमुलस, दैट इज योर सिग्नल लर्निंग. ओके, नेक्स्ट इज सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी कि सपोज कोई चीज गर्म है, हमें पता नहीं, एक बच्चा को पता नहीं है कि वो चीज गर्म है. अगर वो अनजाने से ही अननोइंगली इफ द चाइल्ड टच द पॉट देन देयर विल बी ए सेंसेशन. ओके, तो वहां पे वो क्या करेगा? सडनली उसको पेन होगा. तो वो स्टिमुलस है. ठीक है, स्टिमुलस उसको गर्म का स्टिमुलस मिला तो वहां पे सडनली वो क्या करेगा? तो यहाँ पे वो हाथ को उठा देगा. तो यहाँ पे क्या हुआ? सिग्नल लर्निंग. ये हो गया सिग्नल लर्निंग. ठीक है, रेस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस. एनी एग्जांपल्स कैन बी टेकन. Next one is stimulus response learning. Stimulus response learning means learning a precise response to specific stimulus. ओके, तो यहाँ पे धीरे धीरे सिग्नल लर्निंग से हमें स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग लर्निंग ए प्रिसाइज रेस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक स्टिमुलस. मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक स्टिमुलस से कैसे हमें रेस्पॉन्स करना है वो सीखते हैं. ठीक है, तो सेकेंड स्टेप इज योर लर्निंग ए प्रिसाइज रेस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक स्टिमुलस. गरम था चीज, पता नहीं था, हाथ लग गया तो अपने आप हाथ उठ जाता है. तो वहां से हमें एक सीख मिली कि गरम चीज से बहुत टेम्परेचर से हाथ जल भी सकता है. तो कोई भी अगर चीज गरम हो तो उसे हमें छूना नहीं चाहिए. तो स्पेसिफिक स्टिमुलस जब गरम हो तो हमें नहीं छूना है उसे. तो यहाँ पे हमें स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग मिल गया. नेक्स्ट इज चेनिंग, द कनेक्टिंग ए सीरीज ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स पेयर्स. ओके, यहाँ पे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस के अंदर एक कनेक्शन बनाना. ठीक है, connecting a series of stimulus response pairs. Okay, next is verbal association, learning verbal chains or sequences. यहाँ पे verbal वो stimulus से
वर्बल एसोसिएशन करना होता है। नेक्स्ट स्टेप लर्निंग वर्बल चेन्स और सीक्वेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट किसके बाद क्या आना चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वो हम समझते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सिमिलर स्टिमुली, एक तरह का स्टिमुलस के बीच में डिफरेंशिएट करना, उसके अंदर बीच में उसका अंतर को जानना, डिस्क्रिमिनेट करना, दैट इज योर डिस्क्रिमिनेशन learning. Next is a concept learning, understanding and applying the concept. Now concept learning, understanding the learning and applying that concept in that day-to-day life. Next is rule learning, applying principles or rules to solve the problem. Okay, applying principles or rules to solve the problems. Here concept learning, understanding the learning and applying the concept. Here rule learning, here we are applying the principles to solve the problems. Okay, next is problem solving. Last one is the problem solving, combining rules and concept both. We have to combine the rule and concept to address the complex problems. Okay, so I hope all of you have understood what are the different types of learning. Once again, just we will just again we will read this. What are the 8 types of learning? Signal learning, stimulus response learning, chaining, verbal association, discrimination learning, concept learning, rule learning, problem solving. Signal learning, signal से हमें जो सीख मिलती है, response to the signal, that is signal learning. Stimulus response learning, okay, you have to learning a precise response to a specific stimulus. Chaining, connecting a series of stimulus response pairs. Verbal association, learning verbal chains or sequences. Discrimination learning, discriminating between differentiating or discriminating between the similar stimuli. Then concept learning, understanding and applying the concept. Rule learning, applying the principles or rule to solve the problems. Problem solving, combining both rules and concept to address the complex problems. Next one is your condition learning, conditions of learning. Okay, what are the conditions of learning? Gagne proposed that different types of learning requires different instructional conditions. Okay, he identified 9 instructional events that correspond to mental conditions for learning. तो यहाँ पे conditions of learning में गाग्ने ने 9 तरह का instructional events को बताया है, ठीक है, conditions को बताया है. क्या है? What are these 9 instructional events? First one is gaining attention, ठीक है. Gaining attention, capture the learner's attention to prepare them for learning. तो learning को मतलब लर्निंग करने के लिए पहला स्टेप्स क्या होता है? गेनिंग द अटेंशन. ओके, कैप्चर द लर्नर्स अटेंशन. पहले पता, सपोज हमें एक बच्चा को कुछ सिखाना है तो पहले उसका अटेंशन को कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप इज गेनिंग अटेंशन. अगर लर्नर का अटेंशन ही नहीं है उस चीज में तो वो सीख ही नहीं पाएगा. सो फर्स्ट स्टेप इज द गेनिंग अटेंशन. Capture the learner's attention to prepare them for learning. Next is informing learners of objectives. It means provide clear objectives to focus the learning process. तो यहाँ पे लर्नर को किस चीज के बारे में पढ़ना है, उसका लर्निंग प्रोसेस के बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव्स बारे में उसको क्लियर बता देना चाहिए, ठीक है. प्रोवाइड क्लियर ऑब्जेक्टिव्स टू फोकस द लर्निंग प्रोसेस. क्या क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें ये चीज करना है, उस सारा लर्निंग प्रोसेस का फोकस उसको दे देना है, ठीक है. नेक्स्ट इज स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग. ओके, हेल्प लर्नर्स मेक कनेक्शंस विद प्रीवियस नॉलेज. यहाँ पे पहले हमें प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्शन करना है. हमें पहले जो भी पढ़ना है, जो भी सिखाना है, उस चीज को जानने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज को इसके साथ कनेक्ट करना है. पहले से हमें पता क्या है, ठीक है. सो स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग. Next is presenting the content. Deliver the new information in a structured manner. So यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो उसका attention gain करना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, लर्निंग प्रोसेस क्या है, उसके बारे में बताना, इन्फॉर्म करना है. उसके बाद उसको नए चीज को इन्फॉर्म देने से पहले उसका प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करना है. Then only present the deliver the new information in a structured manner. ठीक है, नया चीज को उसके सामने में रखना है. Providing the learning guidance, then offer strategies and hints to facilitate the understanding. वो नया चीज को समझाने के लिए उसको provide learning guidance, उसको guidance देना है. Offer strategic and hints to facilitate the understandings. Next is eliciting
परफॉर्मेंस अलाउ लर्नर्स टू प्रैक्टिस एंड अप्लाई न्यू स्किल हियर। ओके, यहाँ पे उसको गाइडेंस के बाद क्या करना है, एलिसिटिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे लर्नर को अलाउ करना है टू प्रैक्टिस, जो भी उसने सीखा उसको प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करना है और न्यू स्किल्स को अप्लाई करने के लिए भी उसको अलाउ करना है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग फीडबैक, वो काम करने के बाद उसको फीडबैक दो, गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू रीइंफोर्स लर्निंग, उसको रीइंफोर्स करने के लिए उसका लर्निंग को उसको पॉजिटिव फीडबैक, वी शुड गिव द पॉजिटिव फीडबैक। ओके, नेक्स्ट इज असेसिंग परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, इवैल्यूएट द लर्नर प्रोग्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग, वो कितना उसका प्रोग्रेस हुआ है, उसको समझ में कितना आया है, उसका असेसमेंट करना, ठीक है, इवैल्यूएट करना। नेक्स्ट इज एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, हेल्प लर्नर्स अप्लाई नॉलेज टू न्यू सिचुएशन, जो भी सीखा उस नॉलेज को न्यू सिचुएशन में कैसे अप्लाई किया जा सकता है उसमें उसको हेल्प करना। सो दीज आर ऑल द 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स। सो फर्स्ट वन इज गेनिंग अटेंशन, इंफॉर्मेशन, informing learners of objectives, stimulating recall of prior learning, presenting the content, providing learning guidance, next eliciting the performance, providing feedback, assessing the performance, enhancing retention and transfer. These are the 9 steps. You can see: gain attention, inform learner of objectives, stimulate recall of prior learning, present the content. Here use visualize, like you have to gain how to gain attention and present the content, like you can use visualization to gain learners attention and also enhance content presentation. We can give them some video audio video systems to gain the attention, and we can present the content also, both we can do it. Okay, next, provide learning guidance, elicit performance, provide feedback, assess performance, enhance retention and transfer to the job. Next is principle and application. What are the principles and applications here? Sequential learning. Okay, sequential learning, the hierarchy emphasizes that learning should be structured in a sequence where mastery of each level is necessary before progressing to the next. ठीक है, sequential learning मतलब हायरार्चियल एम्फासिस क्या करता है, लर्निंग जो है ना वो हमेशा सीक्वेंस में होना चाहिए, ईच स्टेप में हमें मास्टरी होना चाहिए बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप वी शुड बी mastery over the first step, then only we can go to the second step, then you have to master over the second step, then only we can go to the next step, like that. In the first standard you have to master of the first standard, then only you can go to the second standard, like it will go on. Next is instructional design. Gagne's theory is widely used in instructional design, helping educators create effective learning experiences by aligning teaching strategies with the types of learning and the conditions necessary for each. Instructional design. Gagne's theory is widely used in instructional design में Gagne's theory को widely use किया जाता है to help the educators. Educators को help किया जाता है किस चीज में? To helping the educators create effective learning experiences. Okay? By aligning the teaching strategy. Teaching strategy कैसा होना चाहिए? यहाँ पे instructional design किया जाता है. ठीक है, ताकि टीचिंग स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, उधर टाइप्स ऑफ लर्निंग कैसा होना चाहिए, किस तरह का लर्निंग में टीचिंग स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, एंड द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ईच. ओके, नेक्स्ट इज हियर दीज आर द एप्लीकेशंस एंड द प्रिंसिपल्स. लर्निंग आउटकम्स. द थ्योरी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर डिफाइनिंग क्लियर लर्निंग आउटकम्स एंड डिजाइनिंग असेसमेंट दैट accurately measure learners progress. Okay, learning outcomes. Here theory provides a framework. Here the theory provides a framework for defining clear learning outcomes. यहाँ पे जो theory है एक framework देता है ताकि learning outcome क्या है उसको properly define किया जा सके. ठीक है, and designing assessment that accurately measure the learning process. तो learning progress कितना हुआ है उस चीज के लिए एक assessment को डिजाइन किया जाता है. ठीक है, इस चीज से learning का outcome पता चलता है और learners का progress के बारे में पता चलता है. Next is practical implications. What are the practical implications of this theory? Curriculum development, lesson planning, skill assessment. Okay, first one is curriculum development. Educators can use Gagne's hierarchy to develop curricula that build from basic to advanced skill systematically. तो यहाँ पे ये जो Gagne's का hierarchical model है इसको बेस करके करिकुलम को डेवलपमेंट किया जा सकता है. ठीक है, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है.
to develop curricula that build from basic to advanced, मतलब basic से advanced स्किल्स कैसे सिस्टमेटिकली करिकुलम को हम बना सकते हैं, ये चीज हेल्प करती है करिकुलम डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट इज लेसन प्लानिंग। टीचर्स कैन डिजाइन लेसन्स दैट इनकॉर्पोरेट द 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स टू एनहांस लर्निंग इफेक्टिवनेस। मतलब क्लास में अगर बच्चों को पढ़ाना है तो लेसन प्लानिंग जो करेंगे तो दैट हायरार्ची से करेंगे, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि सडनली गए क्लास में और जो भी नया चीज है उसको वोमिट कर दिए, नहीं, we have to go step by step. Okay, next is skill assessment. The hierarchical model aids in identifying prerequisite skills and knowledge gaps, allowing for targeted remediation. Okay, skill assessment. The hierarchical model aids in identifying prerequisite skills. तो prerequisite skills क्या है उसको आइडेंटिफाई करता है hierarchical model, and the knowledge gaps allowing for targeted remediation. उसको कैसे मतलब रेमेडी क्या किया जा सकता है वो भी इस चीज से हम कर सकते हैं। इन समरी, Gagne'S हायरार्चियल थ्योरी ऑफ लर्निंग offers a comprehensive approach to understanding and facilitating learning by emphasizing a structured progression of skill acquisition and tailored instructional methods. I hope all of you have understood Gagne'S hierarchical theory. You can take here one example of these 9 steps. Gain attention. How? For example, okay, everyone, let's start the lesson. Here, cognitive processes, they receive the thing, reception. Okay, so here, attention gain. Identify objects. Objective. Today, we are going to learn about ducks. This is the expectancy. So, learner understood that what we are going to learn. Next is recall prior learning. What do you remember about our lesson on birds? As we are going to learn about ducks, so previous knowledge must be about the birds. So this is your retrieval. Present stimulus. A duck can be defined and described as selective perceptions. Here, different learner will give the different answers. Present stimulus. Next is guide learning. Here are several examples of pictures of ducks. Okay, this is the examples of guide learnings. Semantic encoding. Elicit performance. Now all of you draw your own picture of a duck. This is your elicit performance responding of the students. Provide feedback. Correct, correct, no, ducks don't wear hats. Like that we can give the reinforcements or provide feedback. Assess performance. Good, 10 out of 10. It looks like a chicken. Adjust the beak. Okay, like this we can assess the performance. Next is enhance or retention. Now out of all these bird pictures, identify the ducks. Generalization. Okay, from the simple to complex. This is all about the Gagne'S hierarchical theory of learning. So I hope all of you have understood. Like, share and subscribe my channel for the upcoming videos. Thank you all. Bye bye.